Classic movie review. Celebrity focus. Back to the future. Showbiz Premier League. Hello and welcome to Showbiz Premier League. My name is Shahzad and through the course of this program हम आपको देंगे reviews on a great movie plus celebrity focus as well. लेकिन इससे पहले एक सवाल जो कि अक्सर मूवीज में पूछा जाता है, it's a very famous dialogue कि is it better to have loved and lost than to have never loved at all? अब इसमें जो यूथफुल हीरो होता है वो कहता है कि हाँ भाई क्यों टेंशन लेनी लव की, बेहतर है कि इंसान को जिंदगी में प्यार हो ही ना. बट जो एक्सपीरियंस चाचा जी होते हैं उनके ऑपोजिट, वो नहीं कहते कि बेटा अभी आपको बड़े होना है. The fact of the matter remains कि भाई अगर हम we look at some of the greatest art in the world, चाहे वो कोई फिल्म हो, वो कोई गाना हो या कोई कैनवस पे कोई पेंटिंग हो, majority of the art in the world has been based around that very feeling of longing. वो फीलिंग कि यार आप किसी चीज को चाहते हैं लेकिन उस चीज को पा नहीं सकते. And that is what great art is. यहां तक कि हमारी the great आबदा परवीन ने भी ये बात कही हुई है कि गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है. Ladies and gentlemen, in Showbiz Premier League, हम बढ़ते हैं towards our very first segment, Classic Movie Review. Classic Movie Review. Yes, my pumpkins. Today we're going to be talking about the 1994 released called Forrest Gump, starring Tom Hanks and Robin Wright Penn. And this is such a feel-good movie. I mean, when you watch this movie, you feel good. This movie is starring Tom Hanks and Robin Wright Penn, and इसके साथ-साथ this tracks the journey of a man. एक man जो कि बिल्कुल सादा होता है, right? He is absolutely plain. There is no extra charm to him. There is no extra personality to him. एक बिल्कुल जो average शख्स होता है, ये उसकी कहानी है. But I think from this movie we can all draw positives कि भाई अगर ये शख्स इतना कुछ achieve कर सकता है in life, hey, then why not us? Basically, the story starts with the Forrest Gump, and originally Forrest Gump is based on a novel जो कि 1986 में लिखा गया by the same name. Forrest Gump is a middle class boy. उसकी intelligence below average है, right? He has got crutches on his feet, but आहिस्ता आहिस्ता with life, as he experiences more and more, he grows. और the best part about his character कि यार उसको इल्म भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करता जा रहा है. For instance, one, he teaches Elvis how to dance. Imagine that. इसके साथ साथ भाई एक बार वो पुलिस से भाग रहा होता है, तो भागते भागते वो एक फुटबॉल फील्ड से भागता है, एंड ही इज रनिंग सो फास्ट कि फुटबॉल का जो कोच होता है उसे देखता है एंड पुट्स हिम ऑन द फुटबॉल टीम. उसे फुटबॉल स्कॉलरशिप मिलती है. आफ्टर दैट ही गोज इनटू द आर्मी. आर्मी में जाके हिज कॉलीग गिव्स हिम एन आइडिया अबाउट अ श्रिम्प कंपनी. आर्मी से निकल के वो एक श्रिम्प कंपनी खोलता है एंड मेक्स मिलियंस. आर्मी में he rescues a lot of people from certain death, because of which he is honored in the army as well. And there are so many other things that are happening to him. He is meeting presidents, he is meeting celebrities, और उसे इल्म भी नहीं है इस बात का कि भाई how important is this in the history of the world. लेकिन as always जो बात की थी मैंने earlier on about वो गम, he meets the love of his life, Jenny, in the very first day of school on the bus. और उस वक्त से लेके जब स्कूल का पहला दिन होता है till the end of his life, he keeps on loving Jenny. लेकिन regardless of the love of a sada man, whatever that means, Jenny still wants to be free. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? I'm as stupid as a stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We were like peas and carrots. And Run, Forrest! Hey, stupid! इस मूवी में हम बात करेंगे about Tom Hanks की जो एक्टिंग है इसमें, which is absolutely divine. He also won an award for that, जिसके बारे में आपको बताएंगे. But I think something worth mentioning in this is the acting of the character of Lieutenant Dan Taylor, जो कि basically is from a long family of people in the army, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान दी हुई है for their countries, and he is very patriotic, ठीक है ना, और वो चाहता है कि उसकी जान जो है वो अपने वतन के लिए ही जाए.
right? And Gary, जिसने प्ले किया द कैरेक्टर ऑफ लेफ्टिनेंट डैन टेलर, एट वन पॉइंट दिखाते हैं कि आफ्टर वॉर उनकी जो लेग्स हैं वो एम्प्यूटेट करनी होती हैं. एंड द स्पेशल इफेक्ट्स इन दिस मूवी आर ब्रिलियंट, क्योंकि अगर आप मूवी में देखेंगे कि द लिeutenant when he is in the hospital and he in fact has no legs, special effects are absolutely brilliant. इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, he is always meeting very famous people. इसमें उनकी मुलाकात होती है रिचर्ड निक्सन के साथ, the president of the United States of America, the then president. इसके साथ साथ जॉन लेनन के साथ भी. और उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने एक्चुअली फुटेज ली उन लोगों की और उस फुटेज में लेके उन्होंने टॉम हैंक्स को डाला. And this was something very new, क्योंकि this hadn't been done before. अगर पहले ये हुआ तो बहुत fake लगता था. But for the first time, this was actually done in a fashion where it was acceptable. The movie, however, is very different to the book. In the sense कि movie is in fact book के chapters 1 to 11. और 11 पर जाकर basically movie खत्म हो जाती है, whereas the book in fact actually goes on to talk about this character, Forrest Gump. They even put me on a thing called the All-American team. They sending me to Vietnam. Can you promise me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Okay. For some reason when I was doing seemed to make sense to people. Forget about me! Get yourself out! Been awarded the Medal of Honor. How come? Now this movie Forrest Gump has several references. एक white feather होता है जो कि मूवी की शुरुआत में भी होता है, मूवी के एंड में भी होता है. Now a lot of people say कि the white feather may mean several things. One, Tom Hanks का कैरेक्टर एक बार मूवी में डिस्क्राइब करता है कि भाई how life is so unpredictable, कि क्या do we all have a destiny, कि क्या हम in fact उस white feather की तरह हैं which is going round in the air and has no control over itself. And then he comes to the conclusion कि भाई maybe it is somewhere in between. A lot of people say that the white feather sometimes represents white supremacy over other races, which I'm not entirely sure of, but agar aap thoda research kare, I think you might find more on this. Now, this movie won 6 Oscars, which is absolutely brilliant. It is a commercial movie, but at the same time, it is a feel-good movie. 2001 में they had actually planned कि Tom Hanks के साथ इस मूवी का एक सीक्वल बनाया जाए, Part 2 बनाया जाए, but ever since the 9/11 attacks, जो सितंबर अटैक्स हुए on the World Trade Center, Tom Hanks ने कहा कि भाई अब जो हम स्टोरी सोच रहे थे in our mind, it is no longer relevant. Therefore, any further project for a sequel has in fact been shelved, and we don't know if we will ever get to see Forrest Gump 2. But Forrest Gump 2 से पहले, I genuinely advise you to watch Forrest Gump, the original. It is a feel-good movie. It is a movie for the whole family. Our classic movie review. Gary Sinise, I never thank you for saving my life. and Sally Field. My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're going to have to figure that out for yourself. Celebrity Focus. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो चला हम बढ़े टुवर्ड्स आज का सेलिब्रिटी फोकस. एंड आज के सेलेब फोकस में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शख्सियात ऑफ ऑल टाइम, द लेजेंडरी ब्रूस ली. लेडीज एंड जेंटलमैन, ही वाज बोर्न इन 1940. अब आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा विद रेफरेंस टू फाइट्स, ठीक है, और मानते हैं कि भाई मेजॉरिटी ऑफ हिज फेम वाज गेन्ड थ्रू फाइट्स, बट ब्रूस ली वाज मच मोर देन दैट. अ बिट अबाउट हिज अर्ली लाइफ. ब्रूस ली वाज इन फैक्ट बोर्न इन अमेरिका, इन सैन फ्रांसिस्को, लेकिन व्हेन ही वाज वेरी यंग उनकी फैमिली वापस हांगकांग शिफ्ट हो गई बिकॉज दे वर ओरिजिनली फ्रॉम हांगकांग, एंड ही स्टेड इन हांगकांग टिल हिज लेट टीन्स. लेकिन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ हिज लेट टीन्स बेसिकली वो बहुत उनकी फाइट्स होती रहीं, यानी फड्डे होते रहे, राइट, इन स्कूल, इन कॉलेज. और एक उनका मेजर फड्डा हुआ था, एक बहुत पहुंच वाला बंदा था चीन में, उसके बेटे के साथ फड्डा हुआ था, जिसकी वजह से हिज फादर became really worried about Bruce Lee. And at the age of 18, Bruce Lee moved to America to claim his US citizenship. And once he moved to the United States, a new career began in the life of Bruce Lee.
Stay with us, हम आपको बताएंगे more about this legend right after this break. Showbiz